नमस्कार, I'm अशोक व्यास और ये जो आप देख रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया है, देखिए आपने ये नाम दिया है वर्क एंड इट्स सीक्रेट। श्रृंखला अभी चल रही है और मेन श्रृंखला इटर्नल फ्लेम ऑफ इंस्पिरेशन। और 12 जनवरी 2023 को हमने ये शुरू की और इसमें मेरा साथ दे रही हैं गीता सेतिया जी। गीता जी, आपका फिर नमस्कार। से स्वागत है। नमस्ते। तो विवेकानंद जो हैं वो अपने मित्रों को, या बल्कि उनके जो साथी साधक थे, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य जब रामकृष्ण परमहंस नहीं रहते तो वो उनको अमृतस्य पुत्रा कहकर सुबह सुबह जगाते थे। मतलब जहां पर भी वो साधना कर रहे थे तो इसका मतलब हुआ कि अमृत के पुत्र। तो अमृत के जो पुत्र हैं, ये बात कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है कि आप मुक्त हो, और मृत्यु भी एक प्रकार का बंधन है। तो उससे भी परे जाने की बात भारतीय मनीषा में हमेशा होती रही है। इसके लिए यह जरूरी है समझना कि जो कुछ हम कर रहे हैं कहीं वो हमको बांध तो नहीं रहा है। अगर जो कर रहे हैं वो हमें बांधता है, इसका मतलब ये है क्या कि हम वो करें ही नहीं। मतलब करें नहीं का मतलब है कि जैसे आप पिछली बार बता रही थी कि हम हिमालय में चले जाएं या साधु संत हो जाएं, या बहरहाल तो पॉइंट ये है गीता जी कि फिर एक बार आपका इस श्रृंखला में धन्यवाद के साथ जब मैं स्वागत कर रहा हूँ। वी वर रीडिंग वर्क एंड इट्स सीक्रेट जी। एंड वी वी रेड पार्ट ऑफ इट एंड विल कंटिन्यू। You want to begin? Sure. At the same time, right? Yeah. At the same time, we not only want this mighty power of love, this mighty power of attachment, the power of throwing our whole soul upon a single object, losing ourselves and letting ourselves to be annihilated, as it were, for other souls, which is the power of gods. But we want to be higher even than the gods. The perfect man can put his whole soul upon that one point of love, yet he is unattached. How comes this? There is another secret to learn. I'll read. But I also want to make a comment. Mhm. This is a beautiful way of empowering us when he says that we want to be higher even than the gods. Absolutely. And, Amazing, amazing how we feel that way. and this is अपने coming. वो एक ईगोइस्टिक बीइंग में जब हम होते हैं तो हमें लगता है हम हैं तो खुदा भी है वाली बात सो एक्चुअली आप जो सोच रहे हैं ये अलग बात कर रहे हैं शायद। तो मैं वापस से देखता हूँ। लूजिंग आवर सेल्फ एंड लेटिंग आवर सेल्फ बी एनाइलेटेड एज इट वर फॉर अदर सोल्स व्हिच इज द पावर ऑफ द गॉड्स, बट वी वांट टू बी हायर इवन देन द गॉड्स। At the same time, we not only want this mighty power of love, this mighty power of attachment, the power. So मैं देख रहा हूँ कि वो इसको पॉजिटिव वे में कह रहे हैं, वो ईगो की बात नहीं कर रहे अच्छा हैं। मैं अहम ब्रह्मस्वामी की नहीं, अहम वो ब्रह्मास्मि में भी ईगो नहीं है वैसे। उसमें वो उस बारे में बात कर रहे हैं मुझे लगा कि वो बात कर रहे हैं कि हाँ, समटाइम्स वी स्टार्ट फीलिंग लाइक नहीं, बिगर अथॉरिटी देन वो द एब्सोल्यूट नहीं, विवेकानंद तो सब पॉजिटिव आने वाला है। पॉजिटिवली कह रहे हैं वो इस बात को। इनफैक्ट वो कहते हैं आगे, द परफेक्ट मैन कैन पुट हिज होल सोल अपॉन दैट वन पॉइंट ऑफ लव, येट ही इज अनअटैच्ड। तो ये उसके कंटिन्यूएशन में वो थॉट आ रहा है अच्छा कि तो आपने देखा होगा जो संत हैं जिनका रियलाइज है, उनके पास जितना प्रेम का वातावरण रहता है, अमेजिंग उनके स्पंदन होते हैं। जैसे अब चूंकि गृहस्थी में हम लोग हैं और हम देखते हैं कि कई बार दादा दादी हैं, वो तरसते रह जाते हैं कि बच्चे उनके पास आए या कोई उनके पास आए, अकेलापन आ जाता है। पर कई संत महात्मा हैं, उनके पास हजारों की संख्या में या सैकड़ों या जो भी है, तो उनके पास क्या खिंचाव है, जो कि वो कैसा प्रेम है। तो ये वो वाली बात है, अटैच नहीं है मगर प्यार है। तो पूरा प्यार है फिर भी अटैचमेंट नहीं है। तो आई थिंक गोइंग बाय दैट जो मुझे आप जो कह रहे हैं उससे जो मैं सम दिमाग में जो आ रहा है मेरे कि इन दैट काइंड ऑफ लव इज द अल्टीमेट लव जहां पे आप इतना डिटैच होके भी लव कर सकते पूरा प्यार कर सकते हैं जैसे एक स्वामी के लिए उसको तो सारी दुनिया उनके साथ है देखिए, हम तो एकदम ये सूत्र जो सुने सुनाए हैं, वो जो कि अनुभूति के साथ कितना संबंध रखते हैं उस पर नहीं चर्चा करें, तो हम्म उनको ईश्वर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वो आपके अंदर ईश्वर ही देख रहे होते हैं, और जब ऐसा होता है कि आप
ऐसी उपस्थिति में हो जो आपके भीतर जो देख रहा है वो प्रकट होगा। और जब हमें ऐसा अनजाने में भी लगता है कि हमारे भीतर का जो देवत्व है वो जिस स्थान पर प्रकट होगा तो वो हमें अच्छा लगेगा। हमें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो हमें एनकरेजिंग बातें करते हैं, जो हमारे अंदर का एक जैसे पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल। विवेकानंद ने भी वो कहानी सुनाई है कि वो शेर है ऐसा, उसको दर्पण दिखाया तो उसको पता चला वो अपने आप को भेड़ समझ के रह रहा था। तो वो वाली बात है। क्या बात। संतों के पास ऐसे हमारे अंदर का जो सिंह भाव That's है। how I, that's what I was saying before, ki that's how I feel. Even while reading, this is how you feel. You imbibe that हम्म, energy, उनकी बातों की. बिल्कुल बिल्कुल। तो So, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल. तो आगे बढ़ते बढ़ते मैं ढूंढ रहा हूँ कि आपने छोड़ा The कहाँ beggar is never happy उधर से. यहाँ से। अब ये ये कह रहे हैं द बैगर इज नेवर हैप्पी, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं ऐसा हो गए हैं कि हम लोग बैग करते रह रहे हैं। कभी तो भावनात्मक स्तर पर कर रहे हैं, कभी आर्थिक स्तर पर कर रहे हैं, कभी इंटेलेक्चुअल स्तर पर, या जो भी है बहरहाल। सो Hmm. व्हाट विवेकानंद इज सेइंग इज द बैगर इज नेवर हैप्पी। द beggar only gets a dole with pity and scorn behind it, at least with a thought behind that the beggar is a low object. He never really enjoys what he gets. We are all beggars. Oh, he agrees with me. Whatever we do, we want a return. What a return. We are all traders. We are traders in life. We are traders in virtue. We are traders in religion. Oh, And alas, we are also traders in love. क्या बात है, क्या बात है. अब क्या मैं Hmm. इसमें लेके बहुत जंप कर जाता हूँ, तो अभी हाल ही में एक भारत यात्रा, एक तो Hmm. भारत प्रेम करके और भारत की परिक्रमा करने वालों में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं। और अभी एक राजनीतिज्ञ जो भारत यात्रा पर हैं थोड़े थोड़े अपनी एसी वैन के साथ में, तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं सोच रहा था कि ये लव में दुकान कैसे आ गई। और तो लेकिन ये ट्रेडर्स इन लव इन्होंने पहले से ही कह दिया इतने साल पहले। वी आर ऑल, और लेकिन वो इसको बड़े यूं आत्म प्रशंसा के साथ कह रहे हैं कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोल दी है। तो भाई साहब को छोड़ देते नहीं, हैं, विवेकानंद जी की बात को आगे हाँ, बढ़ाते ये विवेकानंद के बीच में आता नहीं वो जरा. हैं। नहीं नहीं ऐसा है कि हर एक चीज को कंटेक्स्ट में ले लिया मैंने। वो मैं हमारे भी कहते हैं ना विवादी स्वर. अभी उससे भी तो खिलता है ना उससे। बिल्कुल, बिल्कुल, उससे आपको वादी का ज़्यादा पता लग रहा है. इनफैक्ट क्या है कि अब अगर कोई हमारी बात सुन रहे हैं तो वो ऐसा फील कर सकेंगे कि यार हम जुड़े हुए हैं, हम सिर्फ बहुत ऊंचाई पर ही नहीं बात करें, पर विवेकानंद की जो चेतना है उस तरफ हम जुड़ जाए तो ऊंचाई आ जाती है। बहुत, बहुत. तो इसमें आगे मैं चलता हूँ आपकी इजाज़त से। बिल्कुल, बिल्कुल, If बिल्कुल. you come to trade, if it is a question of give and take, if it is a question of buy and sell, abide by the laws of buying and selling. There is हुँ. a bad time and there is a good time. There is a rise and a fall in prices. Always you expect the blow to come. It is like looking at the mirror. Your face is reflected. You make a grimace. There is one in the mirror. If you laugh, the mirror laughs. This is buying and selling, giving and taking. And I'm reading one more paragraph. या बिल्कुल, बिल्कुल. We are caught. How? Not by what we give, but by what we expect. हुँ. We get misery in return for our love, not from the fact that we love, but from the fact that we want love in return. There's no misery where there is no want. Desire, want is the father of all misery. Desires are bound by the laws of success and failures. Desires must bring misery. आप क्या बात कंटिन्यू है. करने के पहले इस पे कुछ बताएं। मैं सोच ही रही थी उस बारे में जो इसमें कह रहे हैं कि डिज़ायर्स ऑफ हैविंग दैट. तो अपने को थोड़ा-सा कई बार रोकना पड़ता है कि देयर केम अ पॉइंट इन माय लाइफ वेयर आई स्टार्टेड टेलिंग माय सेल्फ. बिकॉज़ हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है कि वो मैंने करा तो ये मेरे को वापस इन्होंने तो ऐसे करा या नहीं करा. Then I started telling myself very clearly, you want to do something, you do it. But there should be zero expectation कि वो क्या करे. That's a different person than you are. Having said that, I will say it's not all the time that I'm successful in doing that, but that's the way I see it lately.
वो कहते हैं ना, विजडम कम्स व्हेन इट कम्स, थोड़ा थोड़ा करके भी एक एक अंश भी आता है। तो आई डू बिलीव इन दैट अशोक जी, दो कि इट्स सो ब्यूटिफुली सेड कि that will bring misery. The desire does bring misery in the end, because it's never for the other person is different. Other human being is different. If only we can understand and do our share. We और have to इन्होंने remind ourselves. एब्सोल्युटली उन्होंने कहा कि डिजायर जो है वो जो सफलता और असफलता के नियम है उनके साथ में बंधी हुई हैं। तो लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वी आर जस्टिफाइड इन हैविंग डिजायर्स, और इतना तो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन होगा ही, और कितना भी कहें कहीं ना कहीं रह जाता है। इसलिए वो पहले बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं डिटैचमेंट की। तो ये डिटैचमेंट का डी और डिजायर का डी, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के Amazing. साथ में बैलेंस कर लेंगे तो फिर सही बात। डिविनिटी की तरफ बढ़ सकेंगे। वाह, तीसरा डी। हाँ, और सिर्फ डिजायर रहेंगी तो काफी मुश्किल होगी। आगे चलें आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। आगे द इस ग्रेट सीक्रेट ऑफ ट्रू सक्सेस। The great secret of true success, of true happiness, then, is this: the man who asks for no return, the perfectly unselfish man, is the most successful. Hmm. It seems to be paradox. Do we not know that every man who is unselfish in life gets cheated, gets hurt? Apparently, yes. Christ was unselfish, and yet he was crucified. True. But we know that his unselfishness is the reason, the cause of a great victory, the crowning of millions upon millions of lives with the blessings of the true success. क्या बात है। Beautifully said. Beautifully said. तो द मैन हु आस्क फॉर नो रिटर्न, द परफेक्टली अनसेल्फिश मैन इज मोस्ट सक्सेसफुल। तो उन्होंने Hmm. सक्सेस की एक जो स्वामी विवेकानंद की परिभाषा है उसको हम रट लेते हैं अगर, तो कभी कभी हमें उसको याद करके जब कोई कहे कि यू आर नॉट सक्सेसफुल, या हमारा मन ही कह रहा हो कि ये तो बेटा हुआ ही नहीं, आपने ये तो किया ही नहीं, देन यू आर नॉट सक्सेसफुल। तो And ये it's amazing कि वो मन में आ रहा है मेरे अगला sentence की, but then, you feel cheated, you feel, and he's just saying that out loud, कि yes, you will feel that. हम्म। It's really right, reading your mind, going by that. Yeah. So now let us try and read his mind, and Beautiful. let's see जी. where it takes us. And Hmm. again, कहीं इन्होंने और कहा था कि आप इम्पॉसिबल में अगर विश्वास कर सकते हो तभी आगे बढ़ सकोगे, तो असंभव में विश्वास कर सकेंगे तभी विवेकानंद विवेकानंद का साथ बनेगा। एंड आई रिपीट इट, एंड वी कैन रिपीट दैट मेनी मेनी टाइम्स, बट हियर इज Hmm. अ मैन whose life has inspired millions of people, generation after generation, who in the physical form lived on this earth only less than 40 years, 39 That years. is the very amazing part. So, and so how he managed to have that much knowledge and Insight and compassion and wisdom, and it's amazing. Yeah. तो अमेरिका के साथ भी उनका बहुत गहरा संबंध रह गया। ये हम Hmm. अभी अमेरिका से रिकॉर्ड कर रहे हैं, न्यूयॉर्क से, और ये जो वर्क एंड सीक्रेट लेक्चर है वो एलए कैलिफोर्निया में दिया गया था 1900 में। उसी को मैं आगे पढ़ रहा हूँ। गीता जी, बिल्कुल, बिल्कुल. आस्क नथिंग, want nothing in return, give what you have to give, it will come back to you. But do not think of that now. It'll come back multiplied a thousandfold, but the attention must not be one on that. Hmm. Yet have the power to give. Give, and there it ends. Learn that the whole of life is giving, that nature will force you to give. So give willingly. Sooner or later, you will have to give up. You come into life to accumulate with clenched hands. You want to take, but nature puts a hand on your throat and makes your hands open. Hmm. Whether you will it or not, you have to give. The moment you say, I will not, the blow comes, you are hurt. None is there, but will be compelled in the long run to give up everything. And the more one struggles against the law, the more miserable one feels. It is because we dare not give, because we are not resigned enough to accede to this grand demand of nature, that we are miserable. The forest is gone, but we get heat in return. The sun is taking up water from the ocean to return it in showers. You are a machine for taking and giving. You take in order to give. Ask, therefore, nothing in return, but
The more you give, the more will come to you. The quicker you can empty the air out of this room, the quicker it will be filled up by the external air. Wow. And if you close all the doors and every aperture, that which is within will remain, but that which is outside will never come in, and that which is within will stagnate, degenerate, and become poison. A river is continually emptying itself into the ocean, and it is continuously filling up again, but not the exit into the ocean. The moment you do that, death seizes you. Hmm. तो एक-एक क्या बात पैराग्राफ है. पढ़ के जब हम चुप होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि खूब सारी तालियाँ बज रही हैं। और मुझे लगता है विवेकानंद जब लेक्चर देते होंगे, तो या तो लोग Oh my God. तालियाँ बजाते ही बजाते होंगे। एंड एक एक सेंटेंस, एक एक लफ्ज इस पैराग्राफ का इज टू मनन करना जिसको बोलते हैं, जिस पे इट इज बिल्कुल। दैट इट इज अ बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. तो द पावर ऑफ गिविंग, दैट्स essentially what it is. देना ही है, और नहीं देंगे तो प्रकृति आपसे ज़बरदस्ती ले लेगी. दिलवा देगी। आपके गले के ऊपर हाथ रख देगी, आपका हाथ खुल जाएगा, आप कितना भींच के रखोगे, छोड़ना ही पड़ेगा। तो गिव विलिंगली विलिंगली. दो। तो जा अपनी प्रसन्नता से देना, ऐसा उनका कहना है। और हम अभी अमेरिका में भी एक थैंक्सगिविंग डे मनाते हैं, और तो भारतीय परंपरा की दृष्टि से दान के महत्व के बारे में बात आती है। हम्म. अ, पर यह है कि अपने बारे में स्पष्टता के साथ देना है, और देते समय ये अपेक्षा कि मैंने ये दे दिया तो गीता जी मुझे ये वापस दे देंगी या अमुक जगह मैंने किसी मंदिर में कुछ किया है तो मैं इसलिए कि मेरा नाम हो जाएगा, अखबार में फोटो छप जाएगी, वो एक अलग स्तर पर ले जाता है। तो ये वो जिस तो तरह के होगा. देने की बात कर रहे हैं वो अलग है। हाँ, तो दिस इज लाइक यू गिव. एक्चुअली भी जब आप कुछ अच्छा करते भी हैं किसी और के लिए, जब अच्छा करते हैं, दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड आल्सो. एनी टाइम यू एंड अप डूइंग समथिंग नाइस विदाउट इवन रियलाइजिंग, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा आता है और आप कुछ अच्छा करते हैं, आपको खुद जितनी खुशी होती है, पता नहीं सामने वाले को तो कितनी होती होगी जो खुद को होती है एक करके. तो वो भावना से आई एम श्योर कि अगर उसको जितना बढ़ाएं उतना अच्छा है. एब्सोल्युटली। And we are given to share. That's what I feel. तो मैंने एक लाइन अंडरलाइन करी आपके लिए, इसको इस पैराग्राफ में रिपीट करता हूँ, फिर आप आगे चलिएगा कि बिल्कुल. लर्न दैट द होल ऑफ लाइफ इज गिविंग, दैट नेचर विल फोर्स यू टू गिव। ये बात है। तो सही बात. जीवन की परिभाषा ये हो गई कि देना है, देना है। और पहले सफलता की परिभाषा होगी कि अनसेल्फिश जो है, वो अनसेल्फिशली जो दे रहा है वो सफल है, ऐसी कुछ बात आई थी। बहरहाल आप आगे चलती हैं जी। Be, therefore, not a beggar. Be unattached. This is the most terrible task of life. You don't calculate the dangers on the path. Even the intellectually recognizing the difficulties, we really do not know them until we feel them. From a distance, we may get a general view of a park. Well, what of what? We feel and really know it when we are in it. Even if our every attempt is a failure and we bleed and are torn asunder, yet through all this, we have to preserve our heart. We must assert our Godhead in the midst of all these difficulties. Nature wants us to react, to return blow for blow, cheating for cheating, lie for lie, to hit back with all our might. Then it requires a super divine power not to hit back, to keep control, to be unattached. Amazing. Even if our every attempt is a failure and we bleed and are torn asunder, yet through all this, we have to preserve our heart. We must assert our God. ये जो पैराग्राफ है, ये पहले वालों से थोड़ा ज़्यादा ध्यान की मांग करता है, Mm. और उसको समझने के लिए थोड़ा डाइव डीप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो Not a beggar. You have to be in the park to get the view, he's saying. From a distance, we may get a general view of the park. वेरी गुड। We don't know till we are really in it. And then nature wants us to react, to return blow for blow, cheating for cheating, lie for lie. It's beautiful. Then it requires a super divine power not to hit back. That control की जो एक feeling की बात कर रहे हैं,
you know how strong you are actually in control. Also, we normally feel ki we have to give it with a full might to feel strong. But here what I'm taking from this is ki in control how strong it is. एब्सोल्युटली। और कई बार लोग कहते हैं कि ये तो नेचुरल है, उसने मुझे ऐसा कहा तो मैंने तो ऐसा कहना ही था, उसने ये कर Absolutely. दिया तो मैंने कर। तो ये उसको कंट्रोल करना है कि The power of, रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट, जैसा हम लोग कहते हैं। yeah, रिएक्ट करने में इम्पल्सिवली आपने रिएक्ट कर दिया, रिस्पॉन्स है तो उसमें एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन जो है वो भी एट प्ले है। सो दैट्स absolutely, वेरी गुड। absolutely. तो ये वाली बात को लेके आगे जी, चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं वर्क एंड इट्स सीक्रेट, दूसरा भाग है, आज ये समाप्त इनके अध्याय, ये लेक्चर की रीडिंग हम कर लेंगे। और every day we renew. एवरी डे we renew our determination to be unattached. We cast our eyes back and look at the past object of our love and attachment and feel how every one of them made us miserable. इसको मैं वापस से पढ़ता हूँ क्योंकि हम में से कई लोग इसमें रेजोनेट करते होंगे, इस तरह की फीलिंग से निकलते हैं। एवरी डे वी रिन्यू आवर डिटर्मिनेशन टू बी अनअटैच्ड, वी कास्ट आवर आई बैक एंड लुक at the past objects of our love and attachment and feel how every one of them made us miserable. We went down into the depths of despondency because of our love. Yep. Found ourselves mere slaves in the hands of others. We were dragged down, and we make a fresh determinations. Henceforth, I'll be master of myself. Henceforth, I will have control over myself. But the time comes, and the same story once more. Again, the soul is caught and cannot get out. The bird is in a net, Oh my God. spinning and fluttering. This is our life. Ashokji, honestly speaking, जी, how many of us can actually relate to every single sentence and word of this? I I think can. I think 100% people can relate to it. And even that feeling, ki henceforth I'm not going to be, and I'm not going to do this, and you are caught up again. It's so ऐसे लग रहा है जैसे somebody is looking inside us and is bringing it all out. एक एक शब्द आप जब पढ़ रहे हैं तो आप what अपने आप an को insight. आप अपने आप से वादा करते हैं कि अब मैं इस जगह फँसूँगा नहीं, लेकिन वापस जाएँगे, फँस जाएँगे। वहीं फंसते हैं. बल्कि वही स्थिति जिससे आप जैसे मन की बात कर रहे होते हैं, हमने सोचते हैं कि हमने रिज़ॉल्व कर लिया है, एंड लेट्स से फॉरगिविंग आल्सो इज़ काइंड ऑफ पैरेलल टू बीइंग डिटैच्ड। जी. क्योंकि आप डिटैच नहीं होंगे तो फॉरगिव अगर आप वही याद करते रहेंगे, उसने मेरे को ऐसा कह दिया था, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, तो फॉरगिवनेस हुई नहीं अंदर से। इसके अंदर और भी लेयर्स हैं, उस पे नहीं जाते हुए, लेकिन डिटैचमेंट के साथ फॉरगिवनेस का संबंध है काफ़ी। बल्कि ऐसा है करना ही कि पड़ता है, मुझे लगेगा करना. अब मैं सोच रही हूँ जब ये सुन पढ़ रही हूँ और सुन रही हूँ कि करना ही पड़ेगा. अदरवाइज देयर इज यू कैन नॉट डिटैच योरसेल्फ अनलेस यू लेट गो. How will you detach if you're still holding on to the thing? That's what I am. I'll be honest, I'm realizing that. Realize भी होता है कई बार वो ना, sometimes something आपको कुछ एक स्वाहा वो एक डलती है ना जब आहुति, तब आप रियलाइजेशन होता है कि यू हैव टू लेट गो टू डिटैच योरसेल्फ. तो इसके साथ-साथ ये हुआ कि ये अगर डिटैचमेंट की प्रैक्टिस ठीक-ठाक हो गई तो फॉरगिव करने की ज़रूरत आएगी नहीं, क्योंकि आपने उनके प्रति इस तरह का भाव रखा ही पहले नहीं कि फॉरगिव करेंगे। तो ये मैं अपने आप को ही देख रहा था कि मैं वो इनकरेक्ट हो गया थोड़ा। डिटैच सच में. डिटैच्ड है, वो तो फॉरगिवनेस वाली स्थिति में जाएगा ही नहीं, उसको तो गुस्सा ही नहीं हुआ। उसने किसी से नाराज़गी अपने अंदर बाँध के रखी ही नहीं है। But I तो think 99% of us, at least, I would say, कि have that, attachment वाली feeling कि कुछ रिश्ता बनाना है तो उसमें हमें attachment लाना पड़ेगा किसी भी चीज से. We feel that, not realizing रिश्ता बनाना है पर कहाँ तक. चलिए, तो आगे पढ़ेंगे तो आप। बिल्कुल. आई नो द डिफिकल्टीज़। I know the difficulties, tremendous they are, and 90% of us become discouraged and lose heart, and in our turn, often become pessimists and cease to believe in sincerity, love, and all that is grand and noble. So, we find men who are in the freshness of their lives have been forgiving, kind, simple, and guileless.
become an old age lying mass of men. Their minds are a mass of intricacy. There may be a good deal of external policy, possibly. They are not hot headed, they don't speak, but it would be better for them to do so. Their hearts are dead, and therefore they don't speak. They don't curse, not become angry, but it would be better for them to be able to be angry, 1,000 times better, to be able to curse. They cannot. There is death in their heart, for cold hands have seized upon it, and it can no more act, even to utter a curse, even to use a harsh word. अब क्या है कि स्वामी जी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं दूसरी कर रहे, तरफ इनफैक्ट ही इज शेयरिंग हिज क्लैरिटी कि व्हाट ही इज सेइंग डजंट मीन दैट यू बिकम डेड मटेरियल और यू बिकम स्टोन। और इनको पता है कि जीवन का मतलब क्या है, और जीवन जब तरंगित होता है तो इस तरह की भावना होगी, इस तरह की संभावना होगी। और अगरचे जब दिल ही टूट गया करके कोई ऐसी जगह पर चला जाएगा, वो कहेगा मुझे जी के क्या करना है, तो ये कह रहे नहीं भाई वैसी सिचुएशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, डिटैचमेंट वो वाला नहीं है। सो वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी पॉइंटेड एंड पियर्सिंग। beautifully said. I attribute one of the things to this that I often think about. I say to know what to do is knowledge. When to do is wisdom. कि कब कहाँ कितना करना है. So let me I think that balancing act has to be there. Absolutely. So let me express my wisdom. हम चाहते हैं कि ये वर्क एंड सीक्रेट खत्म हो जाए, तो हम इसको पढ़ रहे हैं थोड़ा और, ताकि पढ़िए बहुत बिल्कुल लंबा नहीं हो ये। मैं आगे प्रारंभ कर लेता हूँ, 2 पैराग्राफ पढ़ता हूँ फिर आगे चलेंगे। जी. All this we have to avoid. Therefore, I say we require super divine power. Superhuman power is not strong enough. Super divine strength is the only way, Hmm. the one way out. By it alone, we can pass through all these intricacies, through these showers of miseries unscathed. We may be cut to pieces, torn asunder, yet our hearts must grow nobler and nobler all the time. It is very difficult, but we can overcome the difficulty by constant practice. We must learn that nothing can happen to us unless we make ourselves susceptible to it. Hmm. Said, no disease can come to me until the body is ready. It doesn't depend alone on the germs, but upon a certain predisposition which is already in the body. We get only that for which we are fitted. Let us give up our pride and understand this, that never is misery undeserved. Hmm. There never have been a blow undeserved. There never has been an evil for which I didn't pave the way with my own hands. You Hmm. have to know that. Analyze yourselves, and you will find that every blow you have received came to you because you prepared yourself for it. You Hmm. did half, and the external world did the other half. That is how the blow came. That will sober us down. At the same time, from this very analysis will come a note of hope. And note of hope is I have no control of the external world, but that which is in me and nearer unto me, my own world, is in my control. If the two together are required to make a failure, if the two together are necessary to give me a blow, I will not contribute the one which is in my keeping. And how then can the blow come? If I get real control of myself, the blow will never come. सही बात. बहुत सही What a बात. बहुत wonderful सही way of बात. putting it. How Yeah. to take care of yourselves. That's it is beautiful. तो बहुत मैं सुंदर. तो मैं आपको ये भी चाह रहा हूँ कि आप अपने शब्दों में इस बात को बताइए कि जो मुसीबत आती है हमने उसको खुद ही बुलाया होता है कहीं ना कहीं। इसका क्या अर्थ लेती हैं आप? I believe in that actually. क्योंकि जब मैं पीछे जाती हूँ जो भी प्रॉब्लम्स कभी लाइफ में जितनी भी हुई जब भी हुई, व्हेन आई गो बैक एंड थिंक अबाउट इट rationally with a clear mind, yes, I have invited some of it. I could have done few things not to aggravate the situation, but I reacted
and that's why they got aggravated and came to the full blown things. So उधर मैं अपनी responsibility लेती हूँ, ये मैं सोचती हूँ कई बार इस बारे में, when I go back and think about the some तो things. मैं इसको थोड़ा और जनरलाइज करूं तो कई बार हमको जो स्वामी जी इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, उनको लगता है कि कई सिचुएशंस तो हमारे कंट्रोल से इतनी ज्यादा बाहर होती हैं, वेयर इट इज नॉट अ मैटर ऑफ माय रिएक्शन, इट इज That too. जस्ट कमिंग टू मी। तो फिर मैं क्या करूं? तो भी मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद उस जगह पे जाके हमारा हाथ पकड़ लेते हैं कि इसको कैसे रिएक्ट करें, हाउ यू फेसिंग द प्रॉब्लम और चैलेंज, वो आपके हाथ में है। तो अल्टीमेटली अ प्रॉब्लम बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन वी से दैट इट इज अ प्रॉब्लम। नहीं तो वो प्रॉब्लम होती नहीं है। सो विवेकानंद इज अ विनर इधर वे। हालांकि हमको ऐसा लगता है कि यार ये बात तो कह रहे हैं, बट इज इट प्रैक्टिकल? तो वी विल कंटिन्यू, प्लीज He did कंटिन्यू। use the word super divine power. To ये take सही super बात है। divine power, हाँ, not to react, not to be in that. हाँ, You know, सुपर ह्यूमन beautifully से said. काम नहीं चलेगा। हाँ, सुपर ह्यूमन सुपर ह्यूमन पावर इज से नॉट काम नहीं स्ट्रॉन्ग। चलेगा. तो ये इन्होंने बहुत हाई आइडियल रखा है, पर हमारा क्या है, हाई आइडियल देखेंगे तो शायद आगे धीरे धीरे जाएंगे। जी, Yeah, why नेक्स्ट not? करेगा। So I'll just read the next two, three, वी those आर small ऑल द ones. टाइम। We are all the time from our childhood trying to lay the blame upon something outside ourselves. We are always standing up to set right other people and not ourselves. If we are miserable, we say, "Oh, the world is the devil's word." We curse others and say, "What infatuated fools." But why should we be in such a world if we really are so good? If this is a devil's word, we must be devils also. Why else should we be here? Or the people of the world are so selfish. True enough. But why should we be found in that company? If we be better, just think of that. We only get what we deserve. It is a lie when we say the world is bad and we are good. It can never be so. It is a terrible lie we tell ourselves. तो स्वामी विवेकानंद जी से कोई एग्री नहीं करेगा इस बारे में कि वो कह रहे थे टेरिबल लाइक वर्ल्ड इज बैड एंड आई एम गुड, क्योंकि हम सब इसको सोचते भी हैं, मानते भी हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है देखो दुनिया तो ऐसी है, लेकिन मैं तो अच्छी हूँ या मैं तो अच्छा हूँ। He put it so aptly. He said that why are you here? If you are part of this world. ये भी उन्होंने कर दिया, मतलब वो लॉजिक को भी अपने साथ इतना तगड़े तरीके से रखते थे। Mhm. बट व्हाई शुड वी बी इन सच अ वर्ल्ड इफ वी रियली आर सो Absolutely. गुड? Absolutely. Why am I taking it? Why am I here then? तो So, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं वो गीता Ji, जी। Ji, this कहाँ is पर the से है? first lesson. This is the first lesson. This is the first lesson. Okay, this is the first lesson to learn. Be determined not to curse anything outside, not to lay the blame upon anyone outside, but be a man. Stand up by the blame, lay the blame on yourself. You will find that is always true. Get hold of yourself. Hmm. It's very very empowering if we stop playing the blame game कि उसके Yeah, कारण ऐसा गया, उसके कारण absolutely. ऐसा गया। तभी शक्ति होगी और समाधान भी निकलेगा। तो आगे बिल्कुल, चलते बिल्कुल. हैं। It जी. is not a shame. Is it not a shame that at one moment we talk so much of our manhood, of our being good gods, that we know everything, we can do everything, we are blameless, spotless, the most unselfish people in the world, and at the next moment a little stone hurts us, a little anger from a little jack wounds us. Any fool in the street makes these gods miserable. Should this be so if we are such gods? Is it true Hmm. that the world is to blame? Could God, who is the purest and the noblest of souls, be made miserable by any of our tricks? If you are so unselfish, you are like God. What world can hurt you? You would go through the seventh hell unscathed, untouched. But the very fact that you complain and want to lay the blame upon the external world shows that you feel the external world. The very fact that you feel shows that you are not what you claim to be. You only make your offense greater by heaping misery upon misery, by imagining that the external world is hurting you and crying out, "Oh, this devil's world. This man hurts me, that man hurts me," and so forth. It is adding lies to misery.
तो ऐसा बहुत लग रहा खूब। है कि स्वामी विवेकानंद कहीं-कहीं हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं, हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं, अगर हम मुसीबत में हो तो वो कहते हैं ऐसे-ऐसे, बट दिस इज़ हाउ you reach to a point of clarity. So, No, absolutely. Absolutely. final paragraph, Geeta ji, please read. We are to take care of ourselves. That much we can do and give up attending to others for a time. Let us perfect the means. The end will take care of itself, for the world can be a good and pure only if our lives are good and pure. It is an effect, and we are the means. Therefore, let us purify ourselves. Let us make ourselves perfect. तो वर्क एंड इट सीक्रेट का एंड जो है सेंटेंस वो होता है कि लेट अस मेक आवरसेल्व्स परफेक्ट। तो आचार्य शंकर भी जो कहते हैं कि जो चित्त की शुद्धि है उसके लिए कर्म है, कोई वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं है। वो आधुनिक भाषा में, अंग्रेजी भाषा में जब स्वामी विवेकानंद के मुख से अमेरिका में प्रकट होती है बात, तो वही आ जाती है, लेट अस मेक आवरसेल्व्स परफेक्ट। और तो ये परफेक्ट एंडिंग हो गया बहुत वर्क सुंदर, एंड बहुत सुंदर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। तो गॉड ब्लेस कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद भी ब्लेस कर रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग तो बहुत, मिलती होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सीरीज जो होपफुली शुरू हुई है मुझे लगता है और आगे तक जाएगी। the और whole energy is so divine, so pure, so beautiful. You start feeling good. आप पढ़ते हैं ये तो आपको पढ़ते हुए आपको एक एहसास अंदर जो एक एनर्जी है इतनी खूबसूरत आ रही है और इतना वो इंस्पिरेशन है ऐसी to be a better person, and it's beautiful. Make yourself perfect. How perfectly he ended the this dialogue. एब्सोल्युटली। तो वर्क के सीक्रेट के साथ में डिटैचमेंट की जो चाबी है वो स्वामी जी ने हमारे सामने झिलमिलाई है, लेकिन वो हमें अपने अंदर ही डिस्कवर करनी होगी, कोई दूसरा किसी को दे नहीं सकता। ये भी बात उन्होंने कही, बिकॉज अल्टीमेटली ही एम्पावर्स अस बाय अंडरलाइनिंग द आइडिया कि आप किसी दूसरे को ब्लेम मत करो, और वीकनेस जो है वो है डेथ। तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। वो कैसे बनाना है उसके लिए अच्छी बातें सुनना, और इसके लिए आप क्या करो कि हमारे इस कार्यक्रम को भी थोड़ा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और विवेकानंद वाली सीरीज को जरूर देखो, औरों को भी सुनाओ। लेकिन ये नहीं भी करो तो आप विवेकानंद के साहित्य को पढ़ने का जो आपका मन है, सोया सोया उसको जगाएं और विवेकानंद से जुड़ें, बहुत अपने आप सुंदर। से जुड़ें। मुख्य बात यही है, विवेकानंद से जुड़ना इज जुड़िंग विद योर ओन I like सेल्फ, the judding with you. जुड़ी हुई है उनसे। तो हमने हाथ जोड़ दिए इसी बात पर। तो गीता जी का धन्यवाद है। फिर मिलते हैं। धन्यवाद अशोक जी। शब्द श्रोतागण दर्शकों को भी सबका बहुत बहुत मंगल हो, धन्यवाद। सबका सबका कल्याण मंगल हो और पूरे विश्व में शांति हो। और वो भी बोल देते हैं फिर, ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां सुमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा ओम अमृतम पतंगमय। या।